Good morning, all. How are you? I hope all are fine. Welcome to English class. Today we are going to learn a new alphabet. Okay? Letter D. How you will write the alphabet D? हम D लिखे, इससे पहले हम जो पहले अल्फ़ाबेट पढ़ चुके हैं उसके थोड़ा रिमाइंड करेंगे. ओके? फर्स्ट, राइट स्लैंटिंग लाइन, left slanting line, sleeping line. Which letter is this? Letter A, right? Next, standing line, left curve, left curve. Alphabet B. Right curve, alphabet C. देन हम डी को कैसे लिखेंगे, ठीक है. हम स्टैंडिंग लाइन सीखे थे ना, स्टैंडिंग लाइन एंड लेफ्ट कर्व उसी को यूज़ करेंगे. ओके, स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट कर्व. दिस इज द अल्फ़ाबेट डी. इजी है ना, सब कर लोगे ना. ए बी सी डी. डी इज फॉर हम क्या पढ़े थे, डी इज फॉर हम पढ़े थे, डी इज फॉर डॉल, dog, dice and donkey, right? Now open your English handwriting book, page number 12. This is the alphabet D, right? Standing line, left curve. Okay, let's see how we will write the alphabet D. First we have to trace all the standing line here. Then we have to trace left curve. And finally we write the alphabet D. Standing line, left curve. Then what you have to do? Then you have to trace 4 line of D. 1, 2, 3, 4. Okay. Let's see how we will do it. Standing line, left curve. बस इतना ही आपको आज ट्रेस करना है. ओके, सी यू इन नेक्स्ट क्लास.